हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो एंड यू पीपल आर डूइंग रिवीजन प्रॉपर्ली. In this session, we are going to practice three questions of Doppler effect basically. So first I have selected from SPT and last two questions are PYQ of J Advance. Okay. अगर आपने previous session में तीन questions किए हैं with me, then you will be finding these questions very easy. तो चलो start करते हैं. There are two horns H1 and H2 in a car. When sounded together, the driver record 35 beats in 10 seconds. So beat का मतलब क्या होता है? अगर आपके सराउंडिंग में दो साउंड सोर्सेस है, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, देन यू विल बी हियरिंग बीट एंड दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज. डन है. और यहाँ पे हमारे पास दो हॉर्न है, एक H1 ले लो, दूसरा H2 ले लो. लेट्स से फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी F1 है और सेकंड की फ्रीक्वेंसी F2 है. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन F1 minus F2, आई एम जस्ट अज्यूमिंग F1 is greater than F2. It can be F2 minus F1 also. So simply I'm writing mod of this is equal to how much? 35 beats in 10 seconds. So this is equal to number of beats heard per second, right? So that will be equal to 3.5. So this is this thing. Now with horn H2 blowing and car moving towards the wall at a speed of 5 meter per second, the driver noticed a beat frequency of 5 hertz. अब देखो हमारे कार में सिर्फ H2 फंक्शन कर रहा है and there is a wall in front. और ये कार आगे की तरफ जा रही है विथ वॉट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. इस पर्सन को एको सुनाई देता है क्योंकि वॉल से साउंड रिफ्लेक्ट बैक करके वापस ड्राइवर के पास आएगी तो उसे दूसरा वेव सुनाई देगा. और एक तो यहाँ से जो निकल रहा है वो, और दूसरा रिफ्लेक्ट बैक करके यानी कि एको. और इसका जो बीट है, इसकी वजह से जो इस पर्सन को बीट सुनाई दे रहा है, दैट इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज. ठीक है. तो हमें सबसे पहले देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिल सकता है. मे बी वी विल बी एबल टू फाइंड आउट F2. Okay, so that we can do. And then question is, when frequency of H1 is decreased, the beat frequency with two horns sounded together increases. अब देखो जब आप F1 को डिक्रीज करते हो ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ रहा है. इसका मतलब ये होगा F2 minus F1. Then only if you are decreasing F1, right, then number of beat heard will increase. अगर F2 minus F1 करोगे तभी ये पॉसिबल है. F1 माइनस F2 करोगे तो ऑपोजिट हो जाएगा, राइट. सो राइट स्टेटमेंट इसके लिए क्या होगा? 3.5. दिस F2 माइनस F1 इज 3.5. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हॉर्न्स. So this is what we have to calculate, यानी कि F1 and F2. तो चलो फर्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या? यहाँ से जो साउंड निकला, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? F2. ये ऐसे 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 यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके जब ये साउंड ऐसे पर्सन के पास वापस पहुंचेगा तो तुम्हारा क्या होगा? इसको एक दूसरी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी. लेट्स से दैट इज योर F. सो आई मीन डिपेंडिंग ऑन कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, आई एम जस्ट राइटिंग द मॉड. सो F2 माइनस F क्या है? 5 हर्ट्ज के बराबर है. सो द क्वेश्चन इज कि F को F2 के टर्म में हम कैसे निकाल सकते हैं? So this one we can do purely by using Doppler effect thing. So सबसे पहले आप देखो क्या होगा. ये जो एको है उसका जनरेटर कौन है? ये वॉल. वॉल उसको जनरेट कर रहा है. और वॉल उसको क्यों जनरेट कर रहा है? क्योंकि वो कुछ रिसीव कर रहा है. तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि ये वॉल कौन से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को रिसीव कर रहा है. See, this is the source, right? And source is moving towards the wall. So it won't be receiving F2 frequency. It will be receiving something else. So let's say that something else is F dash. So F dash will be equal to original frequency of sound into source is moving towards the observer. Observer here in this case is wall. Because we are trying to calculate wall कितने frequency का sound receive किया है. ठीक है. So F2 into source is moving towards. So you will be writing V by V minus Vs. एंड सोर्स की वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड. सो आप क्या लिखोगे? F2 into 332 by 327. नाउ व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी F? ये F क्या होगा तुम्हारा? फॉर दिस पोर्शन, नाउ यू जस्ट लुक एट दिस थिंग. It feels like this wall is the producer and this person sitting inside car is the receiver. So ये observer हो गया. Done it? So now wall is at rest. Wall तो rest पर ही है. So now source is at rest and observer is moving towards. So F को आप क्या लिखोगे? F dash original frequency of the sound getting emanated from the wall. So this is your F dash and this into यहाँ पे observer is moving towards, so V plus V observer divided by V.
सो दिस विल बिकम एफ डैश इंटू एफ डैश का वैल्यू पुट कर लें क्या, चलो पुट कर लेते हैं, डन है। सो एफ डैश का वैल्यू क्या है तुम्हारा, F2 इंटू 332 डिवाइडेड बाई 327 एंड दिस इंटू हाउ मच यू विल बी गेटिंग, this is V plus V naught. So 332 plus 5, 337 divided by 332. So this will get cancelled and this is F2 into 337 by 327 greater than F2, right? So बीट का वैल्यू कितना होगा, F2 कॉमन ले लो, 337 divided by 327 minus 1 and this is 5, right? So basically what I did, F minus F2 मैंने किया यहाँ पे, F minus F2. So F is your F2 into this, F2 is this. So F2 को कॉमन लिया और ऐसे लिखा, ठीक है। So F2 into this will become how much, 10 divided by 327 is equal to 5. So this will become 2. So F2 is equal to how much, 327 by 2. So this is your 16.3.5. This much hertz. सो F2 हमने निकाल लिया। अब देखो F2 पता है तो F1 इजिली निकाल सकते हैं। F2 माइनस F1 क्या है, 3.5। सो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 3.5। 163.5 minus F1 is equal to 3.5. So F1 is equal to how much, 160 hertz. Easily done, है ना। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, you simply needed to I mean learn about calculation of this thing। इसी की वजह से मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। मुझे पता है आप लोगों को आइडिया भी होगा, आपने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे, बट एनीवे मेरा काम है सारे चीजों को इंक्लूड करना, सो दैट इज व्हाट आई डिड। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईई एडवांस में आया है और देखो कितना इजी क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू लुक एट थिंग्स केयरफुली। फॉर्मूला पुटिंग टाइप का ही क्वेश्चन है एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। So S1 and S2 are two identical sound sources of frequency 656 Hz. S1 क्या कहाँ है, यहाँ है। S2 कहाँ है तुम्हारा, यहाँ सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे दिख रहा है। द सोर्स S1 इज लोकेटेड एट O, S2 मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, इधर की तरफ ये मूव कर सकता है विथ स्पीड दिस। On a circular path around O, as shown in the figure, there are 3 points P, Q, and R on this path such that P and R are diametrically opposite. So P and R you can see diametrically opposite point, while Q is equidistant from them. और Q इक्विडिस्टेंट है, कहने का मतलब ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ऐसा। ओके, नाउ a sound detector is placed at point P. So detector is at point P, कहने का मतलब observer is at point P. The source S1 can move along direction OP and source S1 भी move कर सकता है OP के along. Okay, speed of sound is given. फर्स्ट केस में हमसे क्या पूछ रहा है, when only S2 is emitting sound, only S2, this one, and it is at Q, और S2 तुम्हारा कहाँ है, Q के पास है। The frequency of sound measured by the detector in hertz is. So क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ S2 साउंड रिलीज कर रहा है और ये यहाँ है। Then we are getting asked frequency of sound measured by the detector. सो वी नीड टू सी, जैसे देखो ये तो ऐसे मूव कर रहा है ना, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर की तरफ होगी, टेंजेंशियली इन दिस डायरेक्शन। हाउ मच, 4√2 मीटर पर सेकेंड। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया भी था कि आपके पास सोर्स हो ऑब्जर्वर हो, दोनों को ज्वाइन कर लो। सो दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, डन है। नाउ इफ यू सी हियर केयरफुली, आपको ये चेक करना है, हमारा डिटेक्टर तो रेस्ट में है, सो ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, सोर्स इज मूविंग इन दिस सर्कल। सो वी नीड टू चेक कि सोर्स का कोई वेलोसिटी है क्या इस लाइन के अलोंग। सो दिस एंगल वी आर इंटरेस्टेड इन, ये एंगल कितना होगा, आप देखो दिस इज 90, दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, सो दिस साइड हैज टू बी इक्वल, सॉरी साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, सो 45 45, डन है। सो ये एंगल है तुम्हारा 45, यानी कि सोर्स की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है, 4√2 इंटू कॉस 45। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 4 मीटर पर सेकेंड, सॉर्टेड। अब क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो गया, इस इंस्टेंट पे हमें ये लग रहा है कि डिटेक्टर है, ऑब्जर्वर है और सोर्स उससे अवे जा रहा है विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो। एफ एफ इज इक्वल टू कितना होगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 समथिंग 60 समथिंग, राइट, कहाँ है, ओके आई एम नॉट एबल टू
656 hertz. Okay. So this is your 656 who is moving, source is moving away. So V divided by V plus Vs. और ये हो जाएगा 656 इंटू वी कितना है तुम्हारा, दैट इज योर 324. ओके, सो दिस इज 324 डिवाइडेड बाय 324 प्लस वीएस. So that is 324 plus 4, so that is your 328. So you can simply solve it and you can get the answer for frequency. Sorted. Second में चलते हैं. Consider both sources emitting sound. दोनों ही emit कर रहा है. When S2 is at R, so S2 तुम्हारा कहाँ है, यहाँ पहुंच गया. चलो ठीक है. And S1 approaches the detector with a speed of 4 meter per second. और ये इधर की तरफ जा रहा है. कितने स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से. द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इज व्हाट. सो बीट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर को क्यों वो बीट को लिसन करेगा, क्योंकि उसके पास दो सोर्स का क्या हो रहा है, दो सोर्स का साउंड आ रहा है. सो दो फ्रीक्वेंसी द पर्सन इज कैचिंग एंड दैट इज वाई बीट. तो देखो सबसे पहले हम S2 की बात कर लेते हैं. S2 इस पॉइंट पर है और ये सोर्स है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है. इन दोनों को आप ज्वाइन करो तो ये लाइन मिल रहा है. और S2 की वेलोसिटी यहाँ पे किधर है, इधर की तरफ है ना. और इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट होगा क्या, लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड डिटेक्टर, नो. डन है. यानी कि अगर कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है अलोंग दिस लाइन, इट मींस इस डिटेक्टर को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इस साउंड का, इस साउंड सोर्स का सुनाई देगा, यानी कि 656 हर्ट्ज because of S2. Now for S1 we need to check. So S1 का original frequency 656 ही है, but this source is moving directly towards the observer, you can see. Okay, so what will be the frequency? Frequency because of S1 will be equal to F naught, which is 656 into source is moving towards, so V, velocity of the sound in air, so that is your 324 divided by, आप क्या करोगे, this is moving towards, right? So 324 minus 4, so that is 320. डन है. अब देखो बीट हमें क्या सुनाई देगा, यही क्वेश्चन पूछा है ना. सो यू सिंपली कैलकुलेट दिस डिफरेंस. सो 656 into 324 by 320 minus 656. This will be your answer, right? So 656 and this is your 324 minus 320, so that is your 4 divided by 320. So this will be your number of beats getting heard. Okay. So basically number of beat getting heard, that is beat frequency you will be getting. Sorted. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस इज ऑल्सो जे एडवांस. सो यहाँ पे भी क्वेश्चन देखो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. दिस सिंपली नीड टू पुट इन थिंग्स. अ ट्रेन S1 मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर. इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो. सो दिस इनटू 5/18 एंड दिस 6 टाइम्स में ये कट हो जाएगा. सो 30 मीटर पर सेकेंड. Approaches another train S2 standing on a platform. So this is at rest. चलो ठीक है. An observer O moves with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में. Both the trains are blowing whistles of same frequency 120 hertz. Okay, when O is 600 meter away from S2 and distance between S1 and S2 is 800 meter, the number of beats heard by O is. So O को कितना नंबर ऑफ बीट सुनाई देगा, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा जा रहा है. तो देखो क्या होगा, O को साउंड दो क्यों आएगा, सबसे पहले बिकॉज ऑफ S1 एंड S2 बोथ ब्लोइंग द विसल, राइट. दोनों ही विसल ब्लो कर रहा है, तो दो फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दे सकता है. वैसे तो दोनों का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज ही है, बट वन सोर्स इज मूविंग, अनदर इज स्टेशनरी एंड आल्सो ऑब्जर्वर इज मूविंग. सो फ्रीक्वेंसी getting heard by observer will vary from 120 hertz. Okay, and that is why beat. So let us talk about इस इंस्टेंट पे कुछ उनका कन्फिगुरेशन ऐसा है, ज्योमेट्री कुछ ऐसा है उनके प्लेसमेंट का. सो अगर मैं बात करूं S1 की वजह से, S1 जब विसल ब्लो करेगा तो ऑब्जर्वर को कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देना चाहिए. सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों को ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड. और देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर की भी वेलोसिटी इधर की तरफ है. सो
इस लाइन के अलोंग सोर्स का भी वेलोसिटी है और इस डॉटेड लाइन के अलोंग ऑब्जर्वर का भी वेलोसिटी है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब इस एंगल को आप मान लो थीटा 1 और ये एंगल हो गया थीटा 2। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कॉस थीटा 1 आप क्या लिखोगे? कॉस थीटा 1 विल बी, आई मीन दिस इज 600, दिस इज 800, दिस विल बी 1000, राइट? सो कॉस थीटा 1 विल बी 8/10, राइट? सो दिस इज 8/10 एंड cos थीटा 2 तुम्हारा क्या होगा? दैट विल बी योर 6/10। देन व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन cos? क्योंकि हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन चेक करना है। सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग दिस लाइन कितना होगा S1 का? सो 30 इंटू, चलो इस लाइन को मैं इधर बनाती हूँ। सो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ सोर्स की कितनी है? 30 इंटू how much? That is your 8/10. So this is your 24 meter per second. And what is the velocity of observer along this line? So that is your 10 into 6/10. So that is your 6 meter per second. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि source is moving towards the observer and also observer is moving towards source. This source is releasing frequency, releasing sound of frequency 120 hertz. What will be the frequency of sound getting heard by the person? That's the question, right? So frequency heard by the person क्या होगा? Original frequency into, because observer is moving towards the source, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? V plus velocity of observer, and since source is moving towards the observer, bottom में क्या लिखोगे आप? V minus Vs, 120 into V plus V naught. So V is how much? 330 and V naught is how much? 6. So this will become 336 and then 330 minus 24. So that will become 306. So ये कितना आएगा तुम्हारा? चलो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ, बट आप लोग बिल्कुल मत करना और आप लोग नहीं भी करते होगे, मुझे पता है। सो लेट मी डू हियर। इन द मीन टाइम आप लोग खुद से इसको सॉल्व करो, ठीक है? सो दैट विल कम अराउंड 131.8 हर्ट्ज, ठीक है? सो इफ वी हैव गॉट नाउ, इस ऑब्जर्वर के पास दूसरा फ्रीक्वेंसी क्यों आएगा? बिकॉज दिस S2 इज ऑल्सो ब्लोइंग विसल और इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगेन 120 हर्ट्ज है, बट अपेरेंटली ओ को कितना सुनाई देगा? दैट वी नीड टू चेक। सो दिस सोर्स एट रेस्ट and this observer is what? This observer is moving towards the source. So frequency f dash ले लो, कितना होगा? 120 into observer is moving towards, so this will become V plus V naught. So V तुम्हारा कितना है? 330 and 330 plus 10, so that will become how much? 340. Sorted. So this divided by how much? Divided by 330. So this is this thing. Sorted. अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होना चाहिए बताओ? So let me again use the calculator. So this is this. So this is your 123.6. Okay. So I mean, how many number of beats you are going to hear in this case? कितना सुनाई देगा? Almost 8 something, 8.1 के approx में आएगा. So f minus f dash you will be doing and you will be getting answer approximately this much. ठीक है? So this will be your answer. Sorted? Clear है? आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी एंड यू गॉट इट ऑन द पॉइंट. So anyway, I hope everything is clear, but in case you are having any doubt, you can always let me know in the comment section. Okay. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.